नमस्कार, मी प्रसन्न जोशी. लक्षवेधीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आज बहुतेक सगळ्याच वृत्तपत्रांचा मथळा किंवा महत्त्वाची बातमी होती ती म्हणजे जाकीर नाईक यांचा पाय खोलात जात चाललेला आहे. जाकीर नाईक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन किंवा पीस टीव्हीचे प्रमुख म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जातं. 90च्या दशकापासून भारतामध्ये आणि जगभर सुद्धा ते इस्लामवरती प्रवचनं देतात, भाषणं, व्याख्यानं सुद्धा देतात. मात्र बांगलादेशमधल्या घडलेल्या दहशतवादी घटनेनंतर जाकीर नाईक यांचं नाव वेगळ्या प्रकारे चर्चेत आलं. बांगलादेशमधला हल्ला असो, त्या हल्ल्यातले सामील असलेले आतंकवादी, दहशतवादी असो किंवा भारतातले काही दहशतवादी किंवा त्या मार्गाला लागलेले मुस्लिम तरुण यांचं कनेक्शन जाकीर नाईक यांच्या व्याख्यानांपर्यंत जाऊन मिळालेलं आहे. त्याच्या संदर्भातले पुरावे सुद्धा आलेले आहेत आणि यामुळे मुसलमानांमध्येच एक मोठा वर्ग असा आहे की ज्याचं म्हणणं आहे की जाकीर नाईक यांची भाषणं पटत नाहीयेत. मुंबईतल्या शिया पंथीय मुस्लिमांनी सुद्धा त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती. तर त्याच वेळी जाकीर नाईक यांची सुद्धा एक बाजू आहे, ती सुद्धा समजून घेतली पाहिजे असा सुद्धा आवाज उठवणारी काही मंडळी आहेत. पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज जेव्हा पोलिसांचा एक रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांना सादर झालेला आहे त्यानंतर मात्र जवळपास सगळ्या शंका फिटतायत. कारण जाकीर नाईक हे एक प्रकारचा आडून आणि फार वेगळ्या प्रकारे कट्टर इस्लामचा प्रचार करतात, इतर धर्मांना कमी लेखतात आणि तरुणांची माथी फडकवतात हे स्पष्ट होत आहे. आणि आज आपण चर्चेचा विषय घेतलाय की आता तरी समर्थन बंद होणार आहे का, कोणते मुद्दे घेऊन आपण ही चर्चा घेणार आहोत समोर पाहू शकता तुम्ही ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. जाकीर नाईकमुळे इस्लामची बदनामी होते का? पोलिसांच्या रिपोर्ट नंतर जाकीर अडकलाय का? जाकीरचं समर्थन करणाऱ्यांनी आता धडा घ्यावा का? IRF वर बंदी आणायला हवी का, ज्याची मागणी अनेकांनी केलेली आहे, मुस्लिम समाजातून सुद्धा झालेली आहे. आणि मुस्लिम संघटना जाकीरबाबत गप्प का आहेत, अजूनही स्पष्टपणे काही भूमिका घेऊन बाहेर का येत नाहीयेत. आपल्याला सुद्धा यावर व्यक्त व्हायचं असेल तर आमच्या ट्विटर हँडलवरती जाऊन तुम्ही मत व्यक्त करू शकता. आमच्या @JayMaharashtraN या ट्विटर हँडलवर जाकीर नाईकचं समर्थन आता तरी बंद व्हायला पाहिजे का या मुद्द्याला तुम्ही उत्तर देऊ शकता. आपण चर्चेला सुरुवात करूयात. आपल्यासोबत मान्यवर आहेत. आपल्यासोबत असणार आहेत भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्याय. याशिवाय माझ्यासोबत स्टुडिओमध्ये आहेत मुफ्ती मंजूर जियाई, जे रजा अकादमीचे उपाध्यक्ष आहेत, त्यांचे स्वागत. समीर शेख आपल्यासोबत असतील, कार्यकर्ते आहेत, हमीद दलवाई स्टडी सर्कलचे पुण्याहून आहेत, त्यांचं सुद्धा स्वागत. सगळ्यांचं स्वागत. मी मुफ्ती मंजूर जियाई यांच्यापासून कार्यक्रमाची सुरुवात करेन आणि सगळ्यात शेवटी मी उपाध्यांकडे जाणार आहे. मुफ्ती जी, आप हमें बताइए, रजा अकादमी ने भी जाकिर नाइक के बारे में बात करते वक्त अभी भी कोई किसी भी तरह का उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाए या उनके ऊपर कार्यवाही हो, इस तरह की भूमिका नहीं ली है. आज जबकि ये एक रिपोर्ट, एक खसूसी रिपोर्ट जब पुलिस के द्वारा सीएम को या फिर पेश किया गया है, एक रिपोर्ट जिसके ऊपर उन्होंने सारे आरोप भी लगाए कि हमारा क्या कहना है, उसके बाद अब रजा अकादमी आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आप जोशी जी, मैं आपके हवाले से कहना चाहूँगा, चूंकि पूरा महाराष्ट्र आपको सुनता है और खसूसन जय महाराष्ट्र चैनल को देखता है, जय महाराष्ट्र चैनल के हवाले से पूरे महाराष्ट्र के लोगों को बताना चाहूँगा कि आज ही नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से, जब से ये मामला बना है, उससे पहले सबसे पहली मरतबा 2008 में हम लोगों ने उनके अपोज में बातें की और दुनिया वालों को बताना चाहा, लेकिन लोगों ने इस चीज़ पर भरोसा नहीं किया. जब ये बात सामने आई बांग्लादेश के मामला को लेकर के, तो लोगों के सामने हमने ये बात रखी, ये कट्टरपंथी लोग हैं, इनके इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनकी सोच और इनकी फिक्र इस्लाम की फिक्र के साथ कहीं मिलती नहीं है. सबसे पहली बात हमारे सामने ये आती है कि इस्लाम की फिक्र क्या है. इस्लाम की फिक्र पीस है. इस्लाम का जो फिक्र है वो अमन और शांति है, और अगर अमन और शांति को भंग कोई करता है तो इस्लाम से उसका दूर का भी वास्ता नहीं हो सकता. दूसरी बात जहां तक जाकिर नाइक की है, तो जाकिर नाइक के ऊपर में हम लोगों ने पहले भी कहा है कि ये धर्म परिवर्तन की बात सामने आई. उसके अलावा सामने ये बात आई कि लोगों के अंदर में भेदभाव को पैदा करना ये इस्लाम नहीं सिखाता है. ये ऐसे जब भी कोई भी मामला ऐसा कोई भी सामने आता है तो हमें सबसे पहले प्रशासन के ऊपर में तवज्जो देनी चाहिए थी, और प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लूजपन हमें देखने को मिला है. अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस पर हम लोगों ने काफी बहसें की, काफी मुबाहिसे हुए. हमारा सबसे पहला सवाल यह था हुकूमत की तरफ से कि अगर ऐसे लोग जो भड़काऊ भाषण देते हैं या देश के अंदर में ऐसी भावनाएं फैलाते हैं जिससे कि लोगों के दिलों को ठेस पहुंचती है, ऐसे लोगों के ऊपर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए. ये पहला काम हमने शुरुआत किया था और आपके माध्यम से आज महाराष्ट्र के लोगों ने इसे देखा है कि वो कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई होकर के पेश की गई है रिपोर्ट सीएम के सामने. अब यकीनन है कि हुकूमत और प्रशासन एजेंसियां किस तरीके से इस पर स्टेप लेती है वो सामने आपको. लेकिन रजा अकादमी की ये पूरी तरह से जाहिर सी बात है कि जाकिर नाइक पे कार्रवाई होनी चाहिए, यही भूमिका है. सिर्फ रजा एकेडमी की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 85% मुसलमान जो कि सूफिज्म से जुड़े हुए हैं, उन तमाम मुसलमानों की ये आवाज है कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. अच्छा, आप सूफिज्म में आप विश्वास रखते हैं? बिल्कुल. मैं हाजी अली दरगाह में ट्रस्टी हूं, माहिम दरगाह में ट्रस्टी हूं. जी, मैंने ये सवाल पूछने के पीछे एक खास मकसद था जिसकी वजह से मैंने आपको ये सवाल किया है. मैं थोड़ी देर के बाद उस सवाल पे भी आने वाला हूं, क्योंकि
जो सूफीज्म जो 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 बात इस्लाम में आने बाद में आई थी उसके बारे में जाकिर नाइक साहब का बहुत अलग कहना है, वो लेके मैं आऊंगा आपके पास। पहले मैं अपने बाकी के मेहमानों के पास जाऊंगा। सबसे पहिले मी पुण्याला जाईन, आपल्यासोबत समीर शेख आहेत। समीर जी, स्वागत आहे तुमचं। हमीद दलवाई स्टडी सर्कलचे कार्यकर्ते आहेत। जाकीर नाईक हे व्यक्तिमत्व आणि ते ज्या प्रकारचा इस्लाम सांगतात त्याच्यामुळे होणारे परिणाम याबद्दलचा हा रिपोर्ट आता सगळा समोर आलेला आहे। तुम्ही याकडे कशा प्रकारे पाहता? सर्वप्रथम मी एक गोष्ट सांगू इच्छितो की भारतीय मुसलमान म्हणून किंवा भारतीय म्हणून भारत देशातली कुठलीही संस्था, कुठलीही संघटना, कुठल्याही धर्माची का असेना ती जेव्हा भारतीय राज्यघटना, सेक्युलरिझम, प्लुरॅलिझम या गोष्टींशी कॉम्प्रोमाइज करते, धर्माधिष्ठित राष्ट्र किंवा धर्माधिष्ठित शरियाधिष्ठित राष्ट्र असं काही मानते किंवा अशी कल्पना मांडते छुपे पद्धतीने किंवा उघड पद्धतीने, ती कुठल्या का धर्माची असे ना, त्याला भारतीय समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने, भारतीय समाजाने विरोध केला पाहिजे। तो माझ्या धर्माचा आहे की किंवा तो दुसऱ्या धर्माचा आहे असं भेदभाव न करता, हा बेसिक पॉइंट झाला। आता येऊयात आपण भारतीय जाकीर नाईक आणि भारतीय मुसलमानांकडे। भारतीय मुसलमानाची जडणघडण आणि जगातल्या इतर मुसलमानांची जडणघडण यात भरपूर फरक आहे। आणि जाकीर नाईक ह्या व्यक्तीचं असं मत आहे की भारतीय संस्कृती आणि भारतीय मुसलमान यांच्यात काही सांगड असत नाही। जगातील सगळ्या मुसलमानांची संस्कृती ही एक आहे। भारतीय मुसलमान किंवा मुस्लिम हा आहे जो जगातल्या उम्मा ही कन्सेप्ट ते मांडतात। जेव्हा नॅशनलिझमची कन्सेप्ट आली तेव्हा ही उम्मा ही कन्सेप्ट खरं तर मागे पडायला पाहिजे होती, किंवा जेव्हा भारतीय मुसलमान उम्मा ही कन्सेप्ट मान्य करतो तेव्हा भारतीय संस्कृतीच्या काही अशा गोष्टी असतात ज्याच्याशी तो ताळमेळ जुळवू शकत नाही आणि त्यामुळे राहिलेला जो 80-82% समाज आहे त्याच्यापासून तो विलग होतो। जाकीर नाईक सारख्या व्यक्ती या समाजाला जो आधीच विलग आहे, ज्याला आधीच प्रतिनिधित्व नाहीये भरपूर क्षेत्रात, त्याला अजून सेक्ल्युजन म्हणू आपण किंवा घेटवाईज म्हणू, हे करण्याचं करतात। ते जाणून बुजून करतात किंवा त्यांच्या भाषणातून हे होतं, पण ते भारतीय मुस्लिमांच्या, भारतीय तरुणांच्या काय म्हणू आपण मेंदूत, मानसिकतेत ते भरत जातं। याला भाषणातून तुम्हाला कधीही ही गोष्ट बोट ठेवता येणार नाही कुठल्याच गोष्टीला, पण भारतीय संस्कृती किंवा भारतीय समाजाला ज्या गोष्टी मुसलमान म्हणून किंवा गंगा जमुनी तहजीब, एका थोडक्यात शब्दात सांगतो, गंगा जमुनी तहजीब या गोष्टीला जाकीर नाईक यांचा विरोध आहे, हे मी स्पष्ट सांगतो। आणि ती भारतीय तुम्ही म्हणताय ते भारताच्या परिप्रेक्ष्यामध्ये खरंच पटण्यासारखं आहे, भावण्यासारखं सुद्धा आहे, पण इस्लामची काही तत्व आहेत। इस्लाम धर्म हा राष्ट्रवाद मानत नाही, तो जॉग्राफी मानत नाही, तो एका सीमेला धरून जर का कोणी राहत असेल तर त्याला मुसलमान सुद्धा तो मानणार नाही, कारण तो मुळात या जगाला एकच आणि सगळ्या एका अल्लाचाच जागा असणारा भाग असल्यामुळे तो तुम्ही म्हणता तसा गंगा जमनी राहूच शकत नाही आणि त्याची चूक ही जाकीर नाईक असणार नाहीत, ते त्यांच्या मूलतत्वांमध्ये। त्यामुळे जाकीर नाईकांना खोटं ठरवताना मला थोडंसं आय बेग टू डिफर तुम्हा दोघांशी, म्हणजे जे जियाई आहे ते आणि तुमच्याशी या बाबतीत माझे थोडेसे मतभेद आहेत की जाकीर नाईक सांगता तो इस्लामच नाही, इतकी टोकाची भूमिका आपण घेऊ शकतो का? मी तो मुद्दा घेऊन मुद्दामून नौशाद उस्मान यांच्याकडे जाणार आहे। नौशाद उस्मान फोनवर आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याकडे मी जाणार आहे। त्यापूर्वी मी केशव उपाध्यांकडे जाईन। केशवजी, आता एवढे सगळे रिपोर्ट्स वगैरे आलेले आहेत, पण तरी सुद्धा पोलिसांचं म्हणा किंवा सत्ताधाऱ्यांचं याबद्दलचं काय मत आहे? प्रसन्न, आजच तो रिपोर्ट, म्हणजे मी वर्तमानपत्रात वाचलं, मी काही प्रत्यक्ष रिपोर्ट बघितला नाही, कारण तो शेवटी सरकार पातळीवर रिपोर्ट असतो, तो सरकारला सबमिट झालाय आणि तो रिपोर्ट आल्याचा आज मी वर्तमानपत्रात वाचलं। मुळात असं प्रसन्न, ही काही एक घटना नाही, मी अशी 3-4 उदाहरणं गेल्या काही वर्षातले जाकीर नाईक यांच्या देऊ शकतो की फक्त बांगलादेशाच्या 2 अतिरेकी, म्हणजे ते जे आले नसरीम इस्लाम आणि रोहित इम्तियाजच्या नंतर आलं असं चर्चा आहे, पण असं ही वस्तुस्थिती नाही, त्याच्या पूर्वी सुद्धा काही घटना घडल्या। अगदी भारतातलं सोडून द्या, ज्या ISIचा आयाज सुलतान नावाचा जो हँडलर होता तो सुद्धा जाकीर नाईकांच्या भाषणाने प्रेरित झालेला होता। एक दुसरं, अमेरिकेमध्ये नजबुल्ला नावाचा एक जण अटक झाला होता, अमेरिकेने तर अटक केली होती, हाही जाकीर नाईक यांच्या भाषणाने प्रेरित होऊन झालेला होता। बँगलोरमध्ये कासिम अहमदला अटक करण्यात आली होती, तो सुद्धा याच भाषणाने प्रेरित होऊन अशा प्रकारे दहशतवादी कृत्याकडे वळलेला होता। राहिल शेख, आपला मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट मधला एक जण होता, तोही अशाच भाषणाने प्रेरित झाला होता। त्यामुळे ही काही एक बाबा कुठून तरी एक उदाहरण आलंय आणि त्यानंतर चुकून झाला असावा, योगाग असावा असं नाहीये, तर अशा प्रकारच्या भाषणांनी
एक समाजातले काही म्हणजे काही गैरसमज पसरवणं किंवा अशा प्रकारे कामाला चुकीच्या मार्गाला लावणं किंवा त्यांना प्रेरित होणं तरुण अशा गोष्टी घडतायत हे आपण पाहतोय. 2008 साली माझ्या माहितीप्रमाणे 2008 साली सुद्धा मुंबई पोलिसांनी अशा प्रकारची कृत्य होत असल्याचा रिपोर्ट सरकारने सादर केला होता. पण सरकारने तर काहीच कारवाई केली नाही. का केली नाही आता खरं तर त्याच्या काँग्रेस राष्ट्रवादीला विचारायला हवं. पण एक नक्की आहे की जर कायद्याप्रमाणे जी त्यातलं समजा उद्याच्या एक संघटनेवर बंदी घालायची असेल, अन्य काही गोष्टी कराव्या लागत असतील, कायदेशीर कारवाई करायची असेल तर ती 100% त्या पद्धतीने होईल. सरकार याच्यामध्ये दोन गोष्टी याच्यामध्ये, एक तर कुठल्याही पद्धतीचं बायस सरकार वागणार नाही. जर ते त्यांच्या गोष्टी चुकीच्या घडतायत हो बंदी घालणं आवश्यक आहे. त्या गोष्टी सरकार पूर्ण पद्धतीने कारवाई करेल. एक गोष्ट मी सांगतो, शेवटी लगेच आज रिपोर्ट आला मग तुम्ही बंदी घातली नाही असा प्रश्न काही जण उपस्थित करू शकतात. मुळात असं आहे की सिमी सारख्या संघटना ज्याच्या सगळं दहशतवादी कारवाया सिद्ध स्पष्ट झाल्या होत्या, तिची बंदी घालताना सुद्धा किती अडचणी यायला हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहेत. हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाने परत बऱ्याच गोष्टी केल्या होत्या, बंदी उठवली होती, पुन्हा नवीन आणावं लागलं. त्यामुळे या पद्धतीच्या सर्व लिगली सगळ्या गोष्टी नीट करून योग्य पद्धतीची कारवाई त्या संघटनेवर आगामी काळात झालेली दिसेल, जाकीर नाईक यांच्यावर झालेली दिसेल. याबद्दल दुमत बघायचं कारण नाही. ठीक. इकडे एक प्रश्न उपस्थित होतो की समजा एखाद्या धर्माच्या मूलतत्वांमध्येच त्या धर्माचं सर्वश्रेष्ठत्व वर्णन केलं असेल आणि ते सांगणारे एखादे व्याख्याते असतील जसे की जाकीर नाईक, तर मग त्या व्यक्तीला आपण दोषी धरायचं का, कारण तो इतर धर्मांवरती टीका करतो. हा थोडासा नाजूकसा मुद्दा आहे पण तो समजून घ्यावा लागणार आहे. मी त्यासाठी नौशाद उस्मान यांच्याकडे जाईन. नौशाद उस्मानजी, तुम्ही आताच आमच्या चर्चेत माझा आवाज पोहोचतोय आपल्यापर्यंत? नौशादजी, नौशादजी माझा आवाज पोहोचतोय आपल्यापर्यंत? नौशाद उस्मान यांच्याशी फोन संपर्क आपण थोड्याच वेळात परत एकदा करू. मी परत एकदा मुफ्ती मंजूर जियाइनकडे परत एकदा जाइन. मुफ्ती जी, एक सवाल मैं जो मेरा भी मराठी में पूछा था वो फिर से आपके लिए हिंदी में पूछ रहा हूं. जाकिर नाइक जिन बातों को कह के इस्लाम बताते हैं, क्या वो सारी की सारी बातें गलत है? जिस तरह से वो इस्लाम का सुप्रीम होना, सर्वश्रेष्ठ होना, बाकी के धर्मों के, बाकी के मजहबों से परे होना, आगे और ऊपर होना, ये जब बताते हैं तो क्या वो गलत है? वो कहते हैं कि जिस तरह से कुछ सूफीज्म आप बताते हो, आप यहां पे दरगाह बनाते हो, ये जो नहीं है इस्लाम में, उसके अगेंस्ट वो बात करते हैं. तो क्या जाकिर नाइक गलत है? देखिए, दो बातें आपके जोशी जी, आपकी इसमें दो बातें सामने आ रही हैं. सबसे पहली बात ये होती है कि दरगाह बनाना और नहीं बनाना, ये उसकी फिक्र नहीं है. दरगाह अगर नहीं बनाने की बात करेंगे तो आज मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तो बनी हुई है मदीने पाक में. इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं है और वो सभी वहां पर जाते हैं, चाहे वो जाकिर नायक हो या उनके पेशवा हो या उसके हार नहीं चढ़ाए जाते जो कि यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं. मैं आपको तफसील दे रहा हूँ. जाकिर नाइक का अपोज हम क्यों करते हैं, पहले ये जानना होगा. जाकिर नाइक की जो गतिविधियां हैं, हम उन गतिविधियों को हम ये महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया में सल्फियज़म एक ऐसी तहजीब बनी जिस तहजीब ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगाया. जिससे हम देखना चाहेंगे ग्लोबल वाइज, अगर हम ग्लोबल वाइज देखना चाहेंगे तो हम जाते हैं सीरिया, हम जाते हैं इराक, हम जाते हैं शाम और दूसरे तमाम ममालिक में अगर हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इन लोगों ने अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा इस्लाम पेश करने की कोशिश की जो सही मानों में नहीं है. इस्लाम एक ऐसा सम्मान वाला मजहब है, ऐसा पीस वाला मजहब है, इतना शांति वाला मजहब है. ये हमें यह बताता है कि एक दूसरों की भावनाओं को समझो. तुम अपने जान से किसी को तकलीफ ना दो, अपनी जबान से भी किसी को तकलीफ ना दो, तुम्हारी एक्टिविटी से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए. आज हमारे सामने ये बात आती है कि इराक के अंदर में जब इतनी बड़ी ताकतें बनकर के उभरी ISIS, उन्होंने अपने तरीके से दुनिया को मगलूब करना चाहा, अपनी खिलाफत को दुनिया के सामने पेश करना चाहा. ये खिलाफत इस्लामियात पर नहीं है. इराक के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उस सदर ने ये बात वाज़ेह तौर पे कहा कि ये वाबिज़म का दो पहलू है, एक सल्फियज़म है, दूसरा टेररिज्म है. एक सिक्के का दो पहलू, एक सल्फियज्म, दूसरा टेररिज्म. तो ये इस्लाम को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं बल्कि टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं. अब बात जाकिर नाइक की जहां हम करेंगे तो जाकिर नाइक की जो फिक्र है उन्हीं सल्फियज्म के साथ में जुड़ी हुई है जो कि ISIS काम कर रही है या उनके लोग काम कर रहे हैं. जब ऐसी विचारधाराओं के साथ वो अगर काम करेंगे दुनिया में तो यकीनन है कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश होगी, ना कि इस्लाम का प्रचार होगा. अब इस्लाम के बारे में एक अच्छा मजहब है या बुरा है, अब ये एक दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर में एक लॉ है हमारे पास कि हर एक शख्स को अपने अपने धर्म के बारे में अच्छा बुरा कहने का ये अधिकार है. तो हमारा मजहब अच्छा है, आपका मजहब अच्छा है, उनका मजहब अच्छा है, हर एक अपने मजहब के बारे में अच्छाई बयान करता है. तो इस्लाम की अच्छाई बयान करना ये अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम को किसी के ऊपर थोपना ये बिल्कुल गलत बात है. इस्लाम को आप थोप नहीं सकते, इस्लाम के मामला को किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं डाला जा सकता है. अब बात धर्म परिवर्तन की आ जाती है
कि वो उन्हें पैसे मिलते हैं, उनके तमाम पैसे कहां से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। ये दुनिया जानती है कि आईएसआईएस को फंडिंग करने वाला सऊदी अरब है। ये हमसे आपसे किसी से छुपा नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। और महाराष्ट्र के लोग आपके हवाले से भी सुन रहे हैं और जानते हैं कि अरब ममालिक आईएसआईएस को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। वही अरब ममालिक जाकिर नाइक को भी फाइनेंस करता है। तब वो फाइनेंस बढ़ावा देने के लिए टेररिज्म को या सूफिज्म को, इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं या टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ये दुनिया जान चुकी है। अब एजेंसियां इस पर काम कर रही है। मुझे सबसे पहले जो आगे का मेरा सवाल है, मैं आपके पर्सनल सेंटिमेंट्स को ना दुखाऊं इसके लिए पहले ही मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या आप इस्लाम के शिया पंथ से, शिया सेक्ट से आप ताल्लुकात रखते हैं? आप खुद? मैं खुद सुन्नी हूं और अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है, और पूरी दुनिया में बसने वाले जितने भी सुन्नी मुसलमान हैं उनसे हमारा ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक गौसे आजम से है, हमारा ताल्लुक सरकार गरीब नवाज से है, और हमारा ताल्लुक सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, जो कि पूरी दुनिया में 85% अबव जो फॉलोअर्स जिनकी पॉपुलेशन है, तो हम अहले सुन्नत वल जमात से हमारा ताल्लुक है, और पूरी दुनिया में उन्हीं की तादाद सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो फिर हमें ये बताइए, मला कल्पना आहे माझे दोन्ही गेस्ट थांबलेले आहेत, मी त्यांच्याकडे जाणार आहे, पण मला एक प्रश्न इकडे पूर्ण करावा लागणार है। लेकिन फिर भी मुफ्ती जी हमें ये बताइए, जिस जाकिर नाइक को जहां पे मक्का खुद बसी हुई है, उसके सऊदी अरब से एक सबसे बड़ा सम्मान मिलता है, उन्हें प्राइज मिलता है, उन्हें बाकी के देशों में भी बुलाया जाता है, खास करके मुस्लिम कंट्रीज में से, और वो खुद पिछले 20 सालों से इस्लाम पे भाषण दे रहे हैं, फिर भी आपका कहना है कि उनको असली इस्लाम पता नहीं है? बिल्कुल। मैं बताऊं जोशी जी, सबसे पहली बात ये होती है कि वहां से परमान मिल जाना, वहां से प्राइज मिल जाना, वहां से उनको शाल मिल जाना और पैसा मिल जाना, ये मैंने आज नहीं बल्कि उस वक्त भी बात की जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के खिलाफ, यानी इमाम हुसैन के खिलाफ उन पर जो इन्होंने लान तान शुरू किया, या यजीद को उन्होंने रहमतुल्लाह अलैहि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा था। ये एक बहुत खास सेंटिमेंट हट होने वाली बात थी कि मेरे आका इमाम हुसैन के बारे में इन्होंने इख्तिलाफ किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक तबका है कि कुछ दिन मक्का के अंदर में ये पवित्र जगह है, एक ऐसी जगह है जहां से हमारा जो अटैचमेंट है वो एकदम दिली अटैचमेंट है, इसके अंदर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो अब ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी मक्का के अंदर में कुछ महीनों तक यजीदियों ने अपना कब्जा कर लिया, और यजीदियों ने वहां के लोगों को कुछ पैसे बांट दिए, वहां के किसी लोगों को तमगा दे दिया, किसी को अवार्ड दे दिया। तो क्या वो अच्छे हो सकते हैं? नहीं। कब्जा तो किसी का भी कहीं पर भी हो सकता है, किसी मुल्क पर। आज वो काबिज है इसलिए वो उनको गिफ्ट और अवार्ड दे रहे हैं। सच ये नहीं है, सच वो है जो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ठीक आहे, मी जातो समीर शेख यांच्याकडे। समीर, एक वेगळाच प्रश्न मी घेऊन तुमच्याकडे येतोय, कारण मी तुमच्याकडे हमीद दलवाईंच्या नाव असणाऱ्या सेंटरचे आपण कार्यकर्ते आहात, ही तर फारच मोठी गोष्ट आहे, पण तरी सुद्धा तुम्ही मुस्लिम तरुणाईचं सुद्धा प्रतिनिधित्व करता। मला सांगा, आता हे आपले पाहुणे आहेत मुफ्ती, ते म्हणतायत की आम्ही सांगतोय तो खरा इस्लामचा एक वेगळा अर्थ आहे, जाकीर नाईक म्हणतायत आम्ही म्हणतोय तो असली अर्थ आहे, कारण तो कुराणावर आणि हदीसवर जास्तीत जास्त बेतलेला अर्थ आहे, आम्ही अर्थ काढलेलाच नाही, लिटरल इंटरप्रिटेशन आम्ही तुम्हाला सांगतोय। तिकडे बाकी आयसिस आहेत आणि बाकीची सगळी मंडळी आहेत। मग असं सांगा, मी एक जर का सामान्य मुस्लिम असेल तर मी विश्वास कोणावर ठेवायचा? अगदी बेसिक प्रश्न विचारलाय तुम्ही, आणि काही प्रश्न त्यांना शिया सुन्नीवर विचारल्यामुळे अवघड प्रश्न विचारले होते। मी पूर्णपणे एकदम ऑनेस्टली सांगतो, जाकीर नाईक जे सांगतात त्याच्यातलं बहुतेक इस्लामशी रिलेटेड आहे। आपण एपोलॉजिस्ट होऊन त्याच्याशी आपण दूर जाऊ शकत नाही किंवा बोटचेपे भूमिका घेऊ शकत नाही। आपल्याला कधीतरी स्वीकाराव्या लागणार आहेत काही गोष्टी, जसं की आयसिस झालं किंवा जाकीर नाईक झाले, किंवा आता यांनी सल्फिझमवर भरपूर बोलले, त्यामुळे मी त्याबद्दल बोलणार नाही। पण इस्लाम मध्ये आणि हे ज्या संघटनेचं प्रतिनिधित्व किंवा सुन्नी समाजाचं, मी पण सुन्नीच आहे, पण हे ज्या सुन्नी समाजाचं प्रतिनिधित्व करतायत, रजा अकॅडमीचं प्रतिनिधित्व करतायत। रजा अकॅडमीचं मागचं बॅकग्राऊंड आपल्याला माहिती आहे, ए आर रहमान झालं, आझाद मैदान झालं, हे सर्व यांचं सर्वांचं एक गोष्ट, कुठल्या गोष्टींवर एकमत होतं हे मी जरा सांगतो। पहिली गोष्ट, शिया, अहमदिया किंवा बाकीचे पंथ यांना हे मुस्लिम मानत नाहीत, पाकिस्तान ही मानत नाही, आणि हेही मानत नाही, मी मानत नाही, मी मानतोय ना म्हणतोय ती गोष्ट वेगळी, हे मानत नाहीत। बरं, पहिली गोष्ट ही झाली। त्याबद्दल त्यांचं जाकीर नाईकांशी एकदम सहमती असेल की शिया वगैरे हे जे आपल्यापेक्षा वेगळा विचार करतात ते मुस्लिम नाहीत। जे आपल्यापेक्षा क्रिटिकल थिंकिंग किंवा आपण म्हणूयात की
इस्लामची आपण चिकित्सा करूयात किंवा कुराण आणि हदीसची चिकित्सा करूयात, या गोष्टी यांना मान्य आहेत का? नाहीये मान्य. मग यांच्यात आणि जाकीर नाईकांच्यात खूप थोडासा फरक आहे. सुफिझमचा फरक आहे तो मान्य करूयात आपण, त्याबद्दल मी त्यांच्याशी सहमत आहे. सलफिझम बद्दल ते म्हणतायत त्याबद्दलही मी सहमत आहे. पण ह्या खूप सोप्या गोष्टी झाल्या. याबद्दल हे ऍक्सेप्ट करण्यात काहीच आपल्याला काय म्हणूयात ते आपल्याला परिवर्तनवादी किंवा प्रोग्रेसिव्ह भूमिका घ्यावी लागत नाही किंवा ह्या खूप स्वीकार्य भूमिका आहेत. पण आपल्याला इंट्रोस्पेक्शन म्हणूयात किंवा आत्मावलोकन करणं गरजेचं आहे, जे हिंदू समाजाने केले महात्मा फुलेंपर्यंत राजा राममोहन रॉय पासून ते इस्लाम समाजात झालेलं नाही. हमीद दलवाईंसारखे एखादं दुसरं उदाहरण आपल्याला सापडते ज्यांनाही भरपूर हाल अपेष्टा सहन करावे लागलेत. हमीद दलवाईंनी जे 72 साली सांगितलं होतं ते आता कळतंय या सगळ्यांना ट्रिपल तलाक बद्दल. अशाच भरपूर गोष्टी आहेत ज्या आता त्याबद्दल बोलणं हे खूप नाजूक, तुम्ही जसं म्हणला तशा नाजूक गोष्टी आहेत, पण याबद्दल बोललंच पाहिजे. आणि आता काळाची गरज आहे. मुस्लिम समाजाचं अस्तित्व धोक्यात आहे जगात आणि भारतात क्रिटिकल थिंकिंग नावाची गोष्ट किंवा परिवर्तनवादी किंवा प्रोग्रेसिव्ह विचार मुस्लिम समाजात का रुजला नाही? त्यात मुल्ला मौलानांचा किती हात आहे? किंवा आपली विचारधारा सुन्नी विचारधारा सोडून जे वेगळे आहेत त्यांच्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? त्यांच्याबद्दल तुमचं तेच मत आहे जे झाकीर नाईकांचं मत आहे. मग तुमच्यात आणि त्यांच्यात फरक एवढाच आहे की काही गोष्टीत मतभेद आहेत, सगळ्या गोष्टीत मतभेद नाहीयेत. मग त्याबद्दल आपण काय करणार? आपण क्रिटिकल थिंकिंग ऑनेस्टली प्रामाणिकपणे काही गोष्टी स्वीकारणं गरजेचं आहे. ज्या भरपूर देशात चाललोय आपण. फक्त काय होतं, भारतात मुस्लिम मायनॉरिटीज मध्ये असल्यामुळं तो खूप जास्त प्रेशर मध्ये येतो आणि कुठलीही गोष्ट आपण परिवर्तनवादी म्हणलो किंवा आपण म्हणलो प्रोग्रेसिव्ह की तो एकदम कोशात जातो की माझा इस्लाम खतरे में येतोय काय, माझा धर्म खतरे में येतोय काय, आणि तो मग अजून घेटो मध्ये जातो. मग या गोष्टीची परिवर्तनवादी भूमिका स्वीकारायला पाहिजे. त्यासाठी काहीतरी आपल्याला कार्यक्रम आखले पाहिजेत. परिवर्तनवादी विचार आहेत त्याबद्दल बोललं पाहिजे. कुराण आणि हदीस याच्याबद्दल ही चर्चा झाली पाहिजे. मी इकडे समीर तुम्ही म्हणताय ते मुद्दे सगळे बरोबर आहेत. फक्त प्रश्न असा आहे, म्हणून मी तुम्हाला माझा पहिलाच प्रश्न होता की मी एक मुस्लिम असेल तर माझी पंचायत. कारण एक लक्षात घ्या, एकदा का मी इस्लामच्या हदीसच्या कुराणच्या क्रिटिसिझम मध्ये गेलो की माझी श्रद्धा संपते, मी इमानवान राहतच नाही. कारण ती पहिली मूलभूत तत्व आहे की मी याच्यावरती अढळ आणि कुठलेही कारण न विचारता श्रद्धा ठेवतो. ही माझं सगळ्यात मुसलमान होण्याचं पहिलं कारणच असावं लागतं. नाहीतर कारण म्हणून तर तो इमान शब्द आहे तिथे. मी तो मुद्दा घेऊन थोडा नाजूक आहे, मी घेतोय तुमच्याकडे येऊन. त्यापूर्वी मी केशव उपाध्यायांकडे जातो. उपाध्यायजी, आज पेपरमध्ये झाकीर नाईक यांच्या वकिलांचं सुद्धा स्टेटमेंट आलेलं आहे की बांगलादेशमध्ये झालेल्या हल्ल्यानंतर केवळ इंटरनॅशनल रिलेशन जपण्यासाठी आणि आपण काहीतरी करतोय करून दाखवण्यासाठी केवळ हा बळीचा बकरा बनवला जातोय. या आरोपाच्या बाबतीत काय म्हणाल? मी सुरुवातीला सांगितलं की असं असतं तर ज्या दिवशी अशा प्रकारची घटना घडली त्या दिवशी बंदीची अधिसूचना काढता आली असती. वातावरण इतकं तापलेलं होतं त्यावेळी कुणी विरोध फार म्हणजे अगदी फार एवढा कुणी विचार हे नसता केला. पण सरकारने ते केलं नाही. सरकारने आज सुद्धा मुख्यमंत्र्यांची तुम्ही प्रतिक्रिया आहे का की मुख्यमंत्र्यांनी लगेच ती रिपोर्ट आला की लगेच निर्णय दिला? असं केलं नाही. आत्ता पहिला रिपोर्ट आलाय, त्या रिपोर्ट बद्दल वेगळ्या स्तरावर त्याची चर्चा होईल. सरकार महाराष्ट्र सरकारचा विचार करत आहे, जे लिगल पॉईंट चर्चेत घेतले जातील. हा आंतरराष्ट्रीय प्रश्न असल्यामुळे MHA शी बोलणं केलं जाईल आणि हे सगळं केल्यानंतर निर्णय काही त्याच्या निर्णयापर्यंत सरकार येईल. आजपर्यंत या क्षणापर्यंत कुठल्याही प्रकारचं घोषणा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतलं नाही. आणि म्हणून मगाच्या पहिल्या विवेचनात मी हे म्हणालो की आम्हाला कुठेही बायसपणे वागायचं नाही. कारण अशा गोष्टीमध्ये बायसपणे वागून चालत नाही, भावनेच्या आधारावर बोलून चालत नाही. तर तुम्हाला ती लिगली केस नीट करावी लागते, तर पुढे जाऊन ती टिकते. त्यामुळे त्या पद्धतीने त्यातलं योग्य असेल तेच सरकार, म्हणजे हे वाक्य, हे शब्द आहेत माझे, पूर्वघोषितपणे किंवा चला हे सरकार आहे किंवा आम्ही काय आमची जी काय सो कॉल्ड प्रतिमा अनेक वेळा रंगवली जाते तशा पद्धतीने काही करण्यात इथं कोणताही हेतू नाही. जे वस्तुस्थिती असेल त्यानुसार कारवाई या संघटनेवर होईल. बरं, माझ्याकडे शेवटची 2-3 मिनिटांनी 2 प्रश्न घेणार आहेत. एक मुफ्ती साहेबांना आणि आपले मित्र समीर शेख यांना. मुफ्ती जी, एक बात थी, जाकिर नाइक ये खुद एक व्यक्ति हो गई, ये तो नाम हो गया एक व्यक्ति का, एक इस्म का. आगे जाके है उनके विचार. जैसे कि हमारे दोस्त समीर जी ने अभी बात की कि भाई थोड़ी सी चीजें यहाँ का वहाँ की छोड़ दी कि भाई आप सलाफिज्म पे, आप भी वहाबिज्म पे, सलाफिज्म पे आप भी वहाँ पे टिप्पणी करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन बाकी चीजों के बारे में, सुन्नीइज्म के बारे में, इस्लाम की प्योरिटी के बारे में और बाकी चीजों में आपका और जाकिर नाइक का तो एक ही आपकी राय है. तो फिर जाकिर नाइक का नाम एक निकाल दिया, जाकिर नाइक को बाजू में कर दिया, फिर रजा अकादमी किस तरह से अलग है उनसे?
देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि धर्म की बात अगर करेंगे तो धर्म को कुरान और हदीस की रोशनी में ही देखना होगा। अगर धर्म की हम बात करें, अब ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को अलग तरीके से आप देखना चाहेंगे, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को अलग तरीके से देखें। नहीं, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि भाई जाकिर नाइक चले गए और मुफ्ती जी आ गए, तो फर्क क्या हुआ? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम है क्या, मैं बताऊं, रज़ा एकेडमी बताए, IRF बताए, वो नहीं। अब सबसे पहले ये देखना होगा कि ऑथेंटिक क्या है, सच्चाई क्या है। सच्चाई को जानने के लिए आपको कुरान और हदीस का मुताला करना होगा। कुरान और हदीस जब हम खोलते हैं तो हमारे सामने साफ जुमलों में होता है कि जबर नहीं है इस्लाम के अंदर में, ज़बरदस्ती कहीं पर इस्लाम के अंदर में नहीं है। जब इस्लाम के अंदर में ज़बरदस्ती नहीं है तो हमारे सामने ये बात ये आती है कि भाई हम धर्म परिवर्तन कैसे कराएं। लोग धर्म परिवर्तन इस तरीके से करवा रहे हैं और कई तरीके के मामला सामने आ गए हैं। बात हमारे और जाकिर नाइक में फ़र्क की अगर आप बात करने जाएंगे तो सबसे पहली बात ये होगी, हमारा इस्लाम वो इस्लाम है जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया और हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं जिसे कुरान और हदीस के जानकार ने हमें बताया। अब जाकिर नाइक को हम कुरान और हदीस के जानकार ही नहीं मानते। पहली बात इसलिए कि एक आलिम और मुफ्ती कुरान और हदीस की बात बताए वो मान्यता होती है, ना कि अननोन पर्सन अगर कुरान और हदीस की बात बताए वो मान्यता नहीं होती है। जाकिर नाइक एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर होने के नाते उनको डॉक्टरी वाली बात बताएं तो समझ में आता है, तो कुरान और हदीस की बात बताएं ये हमारे समझ में नहीं आता है। वजह ये होती है कि कुरान और हदीस का एक फैसला है कि कुरान और हदीस बताने के लिए आपको कुरान और हदीस पर अबूर हासिल होना चाहिए। एक छोटी सी बात मिसाल ये आती है कि वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, कुरान की आयत है, तुम जिहाद करो अल्लाह की राह में ताकि तुम कामयाब हो सको। अब ये जिहाद की बात को वो कहेंगे किसी का कत्ल जाकर के कर दो, किसी के सीने पर गोलियां दाग दो, बेदरेग बच्चों को कत्ल कर दो, औरतों को बेवा बना दो, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम अगर वहां जिहाद का हुक्म देता है तो वहां पर सेंटिमेंट किसी का हट ना हो, तुम जिहाद जिद्दोजहद करो, यानी स्ट्रगल करो, इस अपने कलम के जरिए से लोगों को बताओ, अपनी जबान के जरिए से दूसरों को तक सच्चाई को पहुंचाओ। वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब से फंडिंग करवा करके दूसरों को जान से मरवाना या दूसरों को गलत तरीके से बात बताना, वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून का गलत तर्जुमा दूसरों के सामने पेश कर देना कि तुम जिहाद करोगे तभी कामयाब हो पाओगे, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये है कि तुम्हारी जबान से, तुम्हारी जात से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे मोमेंट से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन वहां तो तकलीफ पहुंच रही है, जब तकलीफ पहुंचेगी तो फिर हम इस्लाम कैसे कहेंगे उसे कि इस्लाम का मानने वाला। ठीक आहे, रजा अकादमी म्हणजे पर्यायानं या मुफ्तीजींचं म्हणणं आहे की तो सांगतायत हा खरा इस्लाम नाहीये, त्याचा अर्थ वेगळा ते काढण्याचा प्रयत्न करतायत। मी पुन्हा एकदा थोडासा रिपीटेशन होईल पण मी समीरकडे परत तोच मुद्दा घेऊन येतो। समीर, हा झाला इंटरप्रिटेशनचा मुद्दा, पण लिटरल अर्थाने जसं आहे तसंच फॉलो करायचं म्हटलं, आणि मी चुकत नसेल तर इस्लाम हे जसं आहे तसंच फॉलो करायचं असतं। तुम्ही त्याच्यामध्ये रिपेअरिंग करून जर का काही इंटरप्रिटेशन काढणं म्हणजे त्याच्या मूळ प्युरिटीमध्ये इम्प्युरिटी आहे असं मान्य केल्यासारखं आहे, असा तो थोडा कॉम्प्लेक्स अर्थ आहे। मला सांगा समीर की जाकीर हुसेन या व्यक्तीला अगदी आपण काय अडगळीत टाकलं, त्यांच्यावरती बंदी येईल, रजा IRF वरती बंदी येईल, प्रश्न असा आहे त्याच्या मागचा जो विचार आहे त्या विचारांचं काय करायचं? अगदी साहजिक आहे। पहिली गोष्ट 1400 वर्षापूर्वी किंवा आत्ताच्या समीर थोड़ा हिंदी बोलेंगे आत्ताच्या तो काळात ज्यादा अच्छा रहेगा। कुठलीही समीर एक गोष्ट विनंती कारणं आहे नाहीये तुमच्या धर्माची, उत्तरामध्ये, ते मानणं तुम्हाला एक एकदम विनंती आहे दुर्दैवी. समीर, तुम्हाला विनंती आहे, आपल्या मुफ्तीजींना तुमचं उत्तर ऐकायचंय, मगाशच्या उत्तरामुळे त्यांना इंटरेस्ट तयार झालाय, हिंदीमध्ये बोलाल बरं होईल। हो, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हिंदी में बात करूंगा। इस्लाम में जो 1400 साल पहले इस्लाम आया था और आज 21वीं सदी में कोई भी चीज काल बाह्य नहीं है। अगर ये मानेंगे तो ये मुझे बिल्कुल गलत लगता है। ये मानेंगे तो एक जाकिर नाइक जाएगा, दूसरा जाकिर नाइक आएगा, एक टेररिस्ट जाएगा, दूसरा टेररिस्ट आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चाइल्ड मैरिजेस, स्लेवरी और ऐसी कई चीजें, खिलाफत, ये ऐसी कई चीजें जो इस्लाम में है, हम इससे दूर नहीं भाग सकते। लेकिन जैसे कि हमने स्लेवरी एबॉलिश की, हमने चाइल्ड मैरिजेस एबॉलिश किए, ये सब हमने लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से किया, वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हमें सोचने की जरूरत है। आज जाकिर नाइक की वजह से टेररिज्म एक चीज आ गई, ऐसे बहुत सारे सवाल है जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। और आज के जमाने के हिसाब से हमें बहुत सारी चीजें जो आउटडेटेड है उसे निकालने के लिए बैठ के क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है। अगर मैं क्रिटिकल थिंकिंग करता हूं तो मुझे आज भी फेसबुक पे फोन करके और बहुत सारी चीजों से मुझे मुनाफिक कहा जाता है, मुझे काफिर कहा जाता है, मुझे बहुत सारी चीजों कही जाती है। लेकिन हमको आगे चल के इस्लाम को, मुसलमानों को जाकिर नाइक और ऐसी चीजों से बचाना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग और ऐसी जैसे काल बाह्य चीजों को हमें इस पे सोचना है और अमल करना है। ठीक है,
समीर, बहुत ख़ास बात आपने कही है। मैं आपको बता दूं कि 1400 साल से इस्लाम आज तक नहीं बदला है। इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते नहीं बदले हैं। हिंदुस्तान का कानून एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर इस्लाम के कानून के साथ हिंदुस्तान के कानून को आप जोड़ने की बात करते हैं कि आप चाइल्ड मैरिज की बात करेंगे, छोटे बच्चों की शादियों की बात करेंगे। मैं 5 इस्लाम के 5 पिलर्स के बारे में नहीं सिर्फ कह रहा 5 हूँ pillars सर। नहीं, इस्लाम के 5 पिलर्स बदलने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो किस चीज़ को बदलेंगे? इस्लाम के 5 पिलर्स पे किसका भी मतभेद नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम जो है, बाकी चीजों पे कह रहा हूँ, जैसे कि चाइल्ड मैरिजेस, खिलाफत, ये ऐसी चीजों की बात कर रहा हूँ मैं सर। ठीक है, आप अब जाने, पहले सबसे पहले समीर इस बात पर तवज्जो ये देनी होगी, कुरान और हदीस ये जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम है, जिसे हम 5 पिलर्स कह रहे हैं, तो यकीनन ये हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए सलीक़े दे रही है। ये हमारा ईमान है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई कई एक चीज़ें ऐसी हैं जो वाजिबात में हैं, जिसको कंपलसरी आपको करना है। अगर आपने उसको कंपलसरी नहीं किया, आपने उस पर अमल नहीं किया, तो क्या मुसलमान कहलाने के लायक भी हम रहेंगे? अगर सिर्फ 5 पिलर को अगर हम देखें तो ये 5 पिलर हमें जीने का सलीका देता है। यही 5 पिलर हमें दुनिया में रह करके अपने आप को स्टेबल करने का तरीका देता है, अपने रब को मानने का तरीका ये 5 पिलर हमें दे रहा है। अल्लाह उसके रसूल पर अपना एतकाद मजबूत करने का तरीका 5 पिलर दे रहा है, लेकिन उसके साथ जीने के उसूल और ज़ाब्ते अगर देखेंगे तो इस्लाम ने पूरा उसूल और ज़ाब्ता दिया है। उसूल और ज़ाब्ते कहते हैं, चाइल्ड मैरिज की जहां तक आप बात करेंगे या कुछ और दूसरे मसाइल सामने आते हैं, तो हम उस पर गौर खौज किया जा सकता है, गौर खौज किया जा रहा है, लेकिन इस्लाम में तब्दीली नहीं ला जा सकती है। ठीक, कानून इस्लाम, ठीक आहे, मी दोघांना कानून इस्लाम में तब्दीली नहीं ला जा सकती। समीर जी आणि मुफ्ती जी, मी थोडंसं तुम्हाला थांबवतोय। मुझे पता है ये बहुत सा नाजुक सा सब्जेक्ट है, और समीर जिस लाइन पे बात कर रहे हैं उनका कहना है कि जाना है तो पूरे अंदर तक जाएंगे, हदीस तक जाएंगे, कुरान तक जाएंगे। लेकिन हमारे जो दूसरे मेहमान हैं मुफ्ती जी, उनका कहना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आप जा नहीं सकते, जिसे हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो रूहानी है, जो ऊपर से आई हुई है। जी, इसलिए ठीक आहे, तो आता चर्चेचा विषयाचा भाग नाहीये, तो तदानुषंगिक होता, तेवढ्या पुरता तो संदर्भ आलेला आहे। पण या निमित्तानं आपल्याला लक्षात येईल, जाकीर नाईक यांच्यावरची बंदी हा झाला चर्चेचा एक भाग। प्रश्न असे ते जे मांडू पाहतायत त्या विचारांचं काय करायचं, आणि ती चर्चा इथेच थांबणारी नाहीये। तेवढ्या पुरता आपण मात्र आपली चर्चा थांबवणार आहोत। त्यापूर्वी लोकांना आपण प्रश्न विचारला होता, लोकांना काय वाटतंय। आपला प्रश्न होता, जाकीर नाईकचं समर्थन आता तरी बंद व्हायला पाहिजे का? काय म्हणतोय आपला पोल, काय म्हणताय तुम्ही, बघूया स्क्रीनवरती। 91% लोकांचं म्हणणं आहे की जाकीर नाईक यांचं समर्थन आता बंद झालं पाहिजे। हा एक चांगला कौल आहे, लोकांच्या मनामध्ये आता त्या बाबतीत एक विचार भूमिका तयार झालेली आहे। या कौलाचा आपण आदर करूयात। चर्चेमध्ये आपल्याला समीर शेख आणि मुफ्ती मंजूर जियाई यांनी वेळ दिला, मी आपल्या दोघांचे आभार मानतो। चर्चेनंतर पुढचा विषय आहे, त्याला उपाध्याय आपल्यासोबत असणारच आहेत। सध्या तरी इथेच थांबूयात। पाहत राहा जय महाराष्ट्र।